example, we have velocity on the y-axis, we have time on the x-axis, like this, and we have this sort, let's say like this, and we have this sort, right? आपके पास यहाँ पे ये speed थी, let's say 20, and this was 15, this was 10, 5, and 0, right? So let's say that this cyclist covered a certain displacement as well. This is 2, this is 4, let's say this was 5, and we have 6 here, 8, 10, 12, 14, and let's say this is 16. Have something of this sort. Can you calculate the thinking distance? First of all, you have to calculate the thinking distance. Our object went at a constant speed, applied the brakes, and came right here came to rest at 16 seconds. This is, you have to find the braking distance, you have to find the braking force, find the stopping. Your thinking distance is this. You can find the thinking distance by the formula, this area, right? That is length into width. So we have the length here, 5, the width is 20. So this is going to be 100 meters, right? B, right? देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है जब वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, तो वो ब्रेक्स वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? The braking distance is calculated by the formula half into base into height. base into height. So the base is here, 11, and the height is 20. So you'll be able to calculate this as 110 meters, right? This is the braking distance, right? You want to calculate the braking force. आप acceleration निकालेंगे by using this gradient. ठीक है everyone? So gradient कैसे निकालेंगे? आप इसका gradient निकाल लें, इससे आपके पास acceleration आ जाएगी। Acceleration का formula क्या होता है? वैसे तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं v minus u over t से। तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 है और टाइम आपके पास 11 है, आपके पास -1.82 meter per second square as the acceleration. So now the braking force is mass is 20 and the acceleration is -1.82. Answer is -36.4 Newton. आपने 11 क्यों लिया टाइम? 5 से लेके 16 तक गया ना, तो 16 minus 5 is 11. 16 minus 5 is precisely 11. So force आपके पास -36.4 न्यूटन आ जाएगी, और जब आप लिखेंगे ब्रेकिंग फोर्स यू राइट इट एज 36.4 न्यूटन। आप स्टॉपिंग डिस्टेंस गिवन बाय थिंकिंग डिस्टेंस प्लस इन दोनों को आप ऐड कर लें, इसको और इसको ऐड कर लें। इस तरह के आपको बड़े क्वेश्चन नजर आएंगे। थिंकिंग डिस्टेंस आपके पास था 100, ब्रेकिंग डिस्टेंस था 110, इन दोनों को ऐड करें, आंसर आपका आ जाएगा 210 meters, right? अच्छा, how can the braking distance be reduced? If you want to reduce the braking distance, how can the braking distance be reduced? ठीक है, आप न्यू टायर्स यूज कर लें। न्यू टायर्स में ग्रूव्स होते हैं और वो फ्रिक्शन बढ़ाएंगे और ब्रेकिंग डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। यू विल यूज न्यू टायर्स which have grooves and they will increase friction. So the braking distance is reduced. Obviously, since stopping distance is the sum of thinking distance and braking distance, so stopping distance will also reduce. So if the road is wet, what happens is, if the road is wet, the braking distance more, since there is less friction. Okay? If the road is wet, there will be more skidding as well. So if the vehicle is loaded, would increase. Stopping distance will also increase. Thinking distance में, yes, अगर कोई बंदा थका हुआ है, ये भी alcohol, that will increase the thinking distance.
and so stopping distance will also increase, right? So I'm going to write here tiredness, alcohol, drugs will increase the, क्योंकि वो reaction time बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? वो if they are on drugs, reaction time will increase and thinking distance will increase. Will increase the thinking distance, and stopping distance will also increase. Will also increase. Two cars, huh? One car is here. So this is one of the cars that we have. And there's another car here, right? अच्छा, इसमें से एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकंड पे और एक जा रही है 100 मीटर पर सेकंड. तो मुझे पता है थिंकिंग डिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, 100 मीटर पर सेकंड वाली, क्योंकि दोनों का रिएक्शन टाइम तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा. ठीक है, अगर आपके पास एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो दोनों का रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसका थिंकिंग डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन टाइम तो सेम है. ये पेपर में क्वेश्चन आया होगा, राइट? 0.1 सेकेंड्स. तो 100 into 0.1 will give you 10 meters. और इसका हो जाएगा, this is 50 into 0.1, this is 5 meters, right? So remember that if the speed of the car, एक की स्पीड ज्यादा है दूसरे की स्पीड कम है, दोनों का रिएक्शन टाइम, जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो तो सिमिलर होगा. अगर दो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. लेट्स से ह्यूमन रिएक्शन टाइम है 0.1. तो आप स्पीड इनटू टाइम करें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, और इसी तरह से आप स्पीड 50 थी टाइम 0.1 था तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा. तो इफ द स्पीड ऑफ द कार इज मोर, happens is the thinking distance is more. To describe qualitatively motion in a circular path due to a force perpendicular to the motion as speed increases if force increases with mass and radius constant, radius decreases if force increases with mass and speed constant. ये उसने फॉर्मूला की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए याद करना आसान हो जाए. मतलब आप अगर एक चीज को कांस्टेंट कर दें, दो चीजों को, तो फोर्स के साथ वो कैसे वेरी कर रही है आपको समझ आ जाएगी, राइट? वैसे ही आपसे वो कैलकुलेशंस नहीं करवाएगा क्योंकि ये A2 के अंदर आता है. ठीक है, लेट्स बिगिन, राइट? Circular motion. So we have an object here which is moving all the way in a circle like this, and let's say that the direction of the velocity is like this, tangent. Okay, there's a force which is acting towards the center, which is causing this uh, circular motion, and that force is known as the centripetal force. The direction of the force is towards the center, and this force is always the resultant force. Centripetal force, the force and acceleration are in the same direction, and this force is known as the centripetal force. Resultant, the resultant force, which is the centripetal force, is always towards the center of the circle. Velocity will always be tangent. ठीक है, जब भी देखेंगे तो velocity is going to be tangential, v, and force is towards the center, and acceleration will always be towards the center as well, right? This is known as the centripetal acceleration. So resultant force is always towards the center of the circle. Acceleration is also towards the center of the circle. Remember that it is always in the direction
of the resultant force. You should know that in circular motion, the direction of motion is perpendicular to the force. Okay, why the object is accelerating although it is moving at a constant speed? The answer for this is, what you write is, the समय हो ये रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है. जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है. So the object's direction of motion is changing, right? And hence velocity is changing. So the object is accelerating. Speed is constant, but the velocity is changing, right? तो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स भी लग रही है. आपको पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, फोर्स भी लग रही है. अगर ये फोर्स खत्म हो जाए किसी वजह से, जो फोर्स लग रही है ये सेंटर पे लग रही है, अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी. अगर फोर्स खत्म हो गई है तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा, क्योंकि कोई चीज नहीं है जो उसको रोटेट करवाएगी. अगर ये फोर्स ही नहीं है तो ये स्ट्रेट जाएगा. ठीक है. सो इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स डिमिनिशेस, centripetal force diminishes, the object will move at a constant speed in the direction of v. It will move in the direction of v. Let's say आपके पास अर्थ है और एक सैटेलाइट है, राइट? So this is the earth here and this is the satellite which is here. This is the satellite, and let's say we have earth here, right? This satellite and earth both are in an orbit. The satellite is in orbit with the earth because the gravitational force between the earth and the satellite provides a centripetal force. There is a gravitational force between that gravitational force, the gravitational force between the masses provide the centripetal force. अगर ये gravitational force है तो centripetal force है. इसी तरह से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं on a road which has friction, this is your vehicle, there is going to be a force towards the center of the roundabout. ये roundabout है, ठीक है? There is a force which is acting towards the center. Which force provides a centripetal force? Friction between the tires and the road. The friction देखिए, the friction between the tires. So the friction between the tires and the road provides the centripetal force. मेरा एक सवाल है. Hmm. आपने कहा है पहले डायग्राम में व्हेन टीचिंग सर्कुलर मोशन के द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट फोर्स. लेकिन सिंस हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो हाउ विल देयर बी अ रिजल्टेंट फोर्स कंसीडरिंग दैट आवर स्पीड इज कांस्टेंट? रिजल्टेंट फोर्स बेटा तो जीरो होगी. स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी है. स्पीड का मैग्नीट्यूड देखिए कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है और वो सेंटर में है, और एक्सेलरेशन जो है वो F इज इक्वल टू ma से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. चेंज हो रही है तो A इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t. एक्सेलरेट करे. एक्सेलरेट क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेक्टर्स बन जाएंगे, आप इनका वेक्टर्स बना सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से वो एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक से समझा. मैंने जज़ाकल्लाह.